Good morning, students. Today we will discuss the pulmonary venous thrombosis, puerperal venous thrombosis. Good morning, students. Today we will discuss the puerperal venous thrombosis and pulmonary embolism. So, what is thrombosis? Thrombosis is a blood clot that forms in the deep vein of the leg or pelvis, either partially or totally blocking the flow of the blood. जब ब्लड फ्लो ब्लॉक होता है किसी थ्रोम्बस या किसी ब्लड क्लॉट की वजह से, वी विल से इट एज थ्रोम्बोसिस. एंड एम्बोलिज्म, जब उस थ्रोम्बस का पार्ट ब्रेक ऑफ होके विल ट्रैवल इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू द हार्ट and migrate towards the lung, we will call it as embolism. So suppose this is a vein and this is thrombus inside the vein. So a blood clot into the vein, into the deep vein of the leg or pelvis either, which is partially blocking or completely blocking the vein, is known as thrombus. This is the thrombosis. And another one is embolism. Is suppose this is a thrombus and a part of this thrombus is breaking off and it is traveling into the bloodstream, which is leading towards the heart or towards the lungs. We will, when a part of, this is the thrombus, and this is the part of the break part of this thrombus. Breaking off and traveling into the vein, into the blood streams, towards the heart or towards the lungs. So we will call it as embolism. Clear? So the prevalence of this is the higher into the Asian and the African countries. The prevalence is however low in Asian and African countries. Basic pathology, the basic pathology of venous thrombosis, it is we can define as the Warco triad. So Warco triad, what comes in this triad is, first one is the vascular stasis, hypercoagulability of the blood, and the vascular endothelial trauma. So these three things means these triad, or we can say Warco triad, comes under the basic pathology of the venous thrombosis. What comes under this triad is vascular stasis. Vascular stasis क्या है? A condition which slow the blood flow in the vein, usually of the legs. सो वॉस्कुलर स्टेसिस में क्या है कि ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, दैट इज़ दी वॉस्कुलर स्टेसिस. हाइपर कोगुलेबिलिटी क्या होती है? हाइपर कोगुलेबिलिटी में ब्लड की टेंडेंसी टू हैव द थ्रोम्बोसिस विल इंक्रीज. द ब्लड विल इंक्रीज इट्स टेंडेंसी टू हैव द thrombosis. That means the hypercoagulability of the blood. And the next one is the vascular endothelial trauma. Vascular endothelial trauma means the endothelial layer of the small artery failed to perform all important roles. So these three things comes into the Warco triad, which is the basic pathology of venous thrombosis. Venous thromboembolic disease include three things. Deep vein thrombosis, it is into the ilio and femoral vein. Thrombophlebitis, superficial and deep vein. And third one is the pulmonary embolism.
So what is the pathophysiology, why it happens into the pregnancy? What is the pathophysiology of deep vein thrombosis or pulmonary venous thrombosis in at the time of pregnancy? In normal pregnancy क्या होता है कि there will be a rise of coagulation factor. There will be a rise of coagulation factor. Coagulation factor 1, 2, 7, 8, 9, 10 and 12. So these are the coagulation factor. कौन कौन सा? 1, 2, 7, 8, 9, 10 and 12. ये होते हैं coagulation factor. This will rise in the normal pregnancy. Normal pregnancy के टाइम पे इनका concentration high हो जाता है, ठीक है, which can cause the thrombus, which can cause the blood clotting into the veins. Plasma fibrinolytic inhibitor are produced by the placenta. प्लासेंटा क्या करता है? प्लाज्मा फिब्रिनोलाइटिक इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है. फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं? वो स्टिमुलेट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ दी ब्लड क्लॉट्स. अगर बॉडी में कहीं पे ब्लड क्लॉट होता है ये तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम होता है फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स का. तो अगर फिब्रिनोलाइटिक इनहिबिटर्स आ रहे हैं मीन्स दैट विल इनहिबिट द फिब्रिनोलाइटिक एजेंट. So there will be more chances to have a blood clot. So plasma fibrinolytic inhibitor increase हो जाता है, production होता है by the placenta, and there will be a low level of protein S into the pregnancy. Pregnancy के time पे protein S markedly decreased. Protein S का काम क्या होता है? It work as a anticoagulant. So if there is a decrease amount of protein S means there is a decreasing amount of anticoagulant which is protein S. So it may lead to the blood clot into the veins. Alteration in the blood constituents like increased number of young platelets and their adhesiveness. Next, venous stasis means slowing the blood flow into the veins. Why it is slowing? क्योंकि देयर विल बी अ कंप्रेशन बाय द ग्रेविड यूट्रस. प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ग्रेविड यूट्रस होता है, जो यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, दैट विल कंप्रेस द इंफीरियर वेना केवा. इंफीरियर वेना केवा के ऊपर एक कंप्रेशन डालता है एंड द इलियक वेन के ऊपर एक कंप्रेशन डालता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्लो हो जाता है ब्लड फ्लो. वो कंडीशन को हम बोलते हैं वीनस स्टेसिस. और उसके कम दिस स्टेसिस विल कॉज द डैमेज ऑफ एंडोथेलियल सेल which we discussed here, vascular endothelial trauma. So this venous stasis is due to the compression of gravid uterus to the inferior vena cava and the iliac vein, and this stasis caused the endothelial cell damage. Next, thrombophiliasis. What is thrombophiliasis? Is thrombophiliasis a condition where is an imbalance in the natural occurring blood clot factor or blood clotting protein. तो are hypercoagulable. Thrombophiliasis are hypercoagulable हो जाते हैं इस टाइम पे because imbalance होगा. Thrombophiliasis is a imbalance between the blood clotting factor. That will thrombophiliasis factor will hypercoagulate स्टेट इन द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरकोगुलेबल होगा थ्रोम्बोफिलियासिस. दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस विच विल अगेन इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोफिलियासिस होना मतलब देयर आर द चांसेस टू इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. It may be inherited means thrombophiliasis may be inherited and it may be acquired. If it is inherited means inherited या तो means genetic condition से हुआ है means there is a deficiency of endothrombin, third protein S, protein C, thrombin gene mutation, prothrombin gene mutation. These are the means the inherited thrombophiliasis, and the acquired thrombophiliasis are due to the presence of lupus anticoagulants and the antiphospholipid antibodies. Next are the risk factor of venous thromboembolic condition or venous thromboembolism. So risk factor are divided into three. How we divide the
mother in these factors, in how we put the mother in three categories, means the in high category, in high risk, we will put the previous, who is having the previous venous thromboembolic, and the thrombophilia. Thrombophilia क्या है? A condition Thrombophilia, I have told you, a condition where there is an imbalance in naturally occurring blood clotting factor or blood clotting protein. Then inherited risk, like in intermediate risk में होते हैं हार्ट डिजीज, SLE एंड सर्जिकल प्रोसीजर, LSCS वाली मदर्स. एंड लो रिस्क में हम रखते हैं जिनको एज ओवर 35, ओबेसिटी, BMI ओवर 35, parity more than third, immobility, dehydration, hyperemesis, multiple pregnancy. So these condition we will put in low risk, and intermediate risk में आते हैं हार्ट डिजीज और सर्जिकल प्रोसीजर, SLE. और हाई रिस्क में आते हैं प्रीवियस, किसी को प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज की या फिर थ्रोम्बोफिलियो की प्रीवियस हिस्ट्री है तो. So this is how we divide the risk factor in 3 levels of venous thromboembolic disease. Deep vein thrombosis. So what is deep vein thrombosis? We have discussed, mean there is a blood clot into the deep vein of the legs or either in the pelvis. So diagnostic, it is unreliable, and majority it remains asymptomatic. In majority deep vein thrombosis, DVT remains asymptomatic. But what symptoms you will see there will be a increased circumference. If you see in the picture, as it is showing in the picture, जो circumference है affected leg का, that will be increased more than 2 centimeter in comparison of unaffected leg. And there will be a pain at the site of DVT. There will be a redness at the site of DVT, as you can see in the picture. And there will be a positive Homan signs. Positive Homan sign means if you say to the plantar dorsiflexion of the foot, if you say the dorsiflexion of the foot, to do the dorsiflexion of the foot to the patient, there will be a pain into the calf muscle. Here into the calf muscle, she will feel the pain if you ask to do the dorsiflexion. Dorsiflexion, like in this condition, she will move her feet. So, and other circumference will be increased. It will be more than 2 centimeter than the affected leg, and the pain will be there, swelling will be there, redness will be there, edema will be there. So these are the symptoms included into the DVT. Next, investigation. Please remember this positive Homan sign, this symptom. This is important. A positive Homan sign we will see in the DVT condition. पॉजिटिव होमन साइन वही है, अगर पेशेंट को डोर्सिफ्लेक्शन करने के लिए बोलते हैं फूट का, तो शी विल फील पेन इनटू द काफ मसल इफ शी इज हैविंग द DVT. इफ शी फील्स पेन इनटू द काफ मसल्स मीन्स शी इज हैविंग अ पॉजिटिव होमन साइंस. Next is investigation. In investigation we can do the Doppler ultrasound. Doppler ultrasound we can do, venography we can do, and MRI we can do. MRI is the most specific diagnostic procedure to diagnose the DVT. In Doppler ultrasound, to detect the change of velocity of blood flow into the femoral vein by noting the alteration in the characteristic of whoosh sound which is audible from the patient vein. So there a whoosh sound comes into the vein, from the vein
of the patient. If there is a alteration, if there is a alteration into this characteristics, means if there is a alteration into the whoosh sound, uh, means there is a velocity into the velocity of the blood flow in the femoral vein is changed, means there is a change in the blood flow of the femoral vein if there is a alteration into the whoosh sound of the patient vein. Venous ultrasonography you can do. It is done by placing the transducer over the femoral vein, then gradually it moves the great saphenous vein and then the popliteal vein, and then to its branch with the deep vein to the calf. So we will start with the femoral vein, then to the great saphenous vein and the popliteal, then to the branch of deep vein. This is we will place. This is how we will place the transducer. Then next, Doppler ultrasound, Doppler USG we can do. Most accurate ultrasound criteria to diagnose the venous thrombosis is, what are the most accurate criteria is, first one is the soft tissue mass within the venous lumen. If we feel that non-compressibility of the venous lumen in a transverse plane under the gentle pressure. So this is the criteria how we can, these are the two criteria, accurate criteria to diagnose the venous thrombosis by the Doppler ultrasound. नेक्स्ट वीनोग्राफी. वीनोग्राफी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एक वाटर सॉल्यूबल रेडियोप्लेक डाई टू डिटेक्ट द वीनस ल्यूमन इज रिलेबल टू डिटेक्ट द वीनस ल्यूमन. फिलिंग को डिटेक्ट करने के लिए, वीनस ल्यूमन की फिलिंग को डिटेक्ट करने के लिए हम इंजेक्ट करते हैं एक वाटर सोल्यूबल रेडियोप्लेक डाई. उसके बाद हम नोट करेंगे फिलिंग ऑफ द venous lumen. If there is any defect in the filling of venous lumen, means we can diagnose it as DVT. And most reliable method is the MRI. By MRI we can found the DVT, or by MRI we can found the venous thrombosis. We can detect the deep thrombosis in the pelvic, iliac or the femoral veins by the MRI. D-dimer assay we can do, but there are more chances of D-dimer assay to come as a full positive result in pregnancy. Next, pelvic thrombophlebitis. What is thrombophlebitis? Thrombophlebitis होता है is a inflammatory process that cause a blood clot to form and block one or more veins. Means एक inflammatory condition है जो कि blood clot form कर देती है और block करती है एक या एक से ज़्यादा veins को. So what could be the organism for this? It is such as anaerobic streptococci or the bacteroides fragilis. So this is the causative organism. Postpartum thrombophlebitis originate in the thrombused vein at the placental site by the organisms such as anaerobic streptococci or the bacteroids. When it is localized, when the clot is localized into the pelvic area, means this thrombophlebitis condition is localized into the pelvic area, we will call it as the pelvic thrombophlebitis. There is no specific clinical feature for pelvic thrombophlebitis, but it should be suspected in case where the pyrexia continue for more than a week in spite of antibiotic therapy. एंटीबायोटिक थेरेपी देने के बाद भी अगर पेशेंट को पायरेक्सिया कंटिन्यू हो रहा है मोर देन अ वीक, सो वी कैन it could be a clinical feature of pelvic thrombophlebitis. Other than this, there are no such specific clinical feature for pelvic thrombophlebitis. Next, it could be extra pelvic spread. pelvis से बाहर भी जा सकता है. It could spread
अगर ये थ्रू राइट ओवेरियन वेन से इंफीरियर वेना केवा में एंड देन टू दी लंग्स में स्प्रेड हो सकता है. Then through the left ovarian vein to the left renal and then to the left kidney it can spread. Retrograde extension iliofemoral vein to produce the clinico-pathological entity of Flamangia alba dolens. It is, or we can say it as white lag. So this condition, when the retrograde extension happens to the iliofemoral vein, where the retrograde extension of this thrombus into the iliofemoral vein, it can produce a condition which is known as Flamangia alba dolens or the white leg. इसमें पेशेंट का जो लेग है वो वाइट हो जाता है और it happens because there is a retrograde extension into the iliofemoral vein. So what is Flamangia alba dolens is it is a clinico-pathological condition usually caused by the retrograde extension of pelvic thrombophlebitis to involve the iliofemoral vein. The femoral vein may be directly affected from the adjacent cellulitis. What could be the clinical feature for this? What are the clinical features for pelvic thrombophlebitis? In the second week of puerperium usually develop, the clinical feature usually develop into the second week of puerperium. There could be a mild pyrexia. Mild pyrexia will be there. It is common into the pelvic thrombophlebitis, and at the time goes, it can lead to the high fever and with the chills and the rigor. And constitutional disturbance such as headache, malaise, raising pulse rate, toxemia may be present, and the leg swelling in the leg, painful, white and cold. These are the clinical features for this. Blood count show the polymorphonuclear leukocytosis. The diagnosis may be made by the venous ultrasound and the CT scan, by the MRI, and the a trial of heparin therapy to be considered. When the symptom improve with the heparin therapy, diagnosis confirmed. So when the symptoms improve with the heparin therapy of the phlegmatia alba dolens, means there is a confirmed diagnosis for this. Next, prophylaxis and the management for venous thrombosis in pregnancy and puerperium. First, we will discuss the preventive measure, how we can prevent the VTE or the venous thromboembolism. What are the preventive measures? Prevention of the trauma. To prevent the venous thromboembolism, we need to prevent the mother from the trauma, sepsis, anemia during the pregnancy and during the labor. Dehydration we should prevent, and dehydration should be prevented during the delivery. Means we need to prevent mother from dehydration during delivery. Next, use of elastic compression stockings and the intermediate pneumatic compression device during the surgery. We can use the stockings, elastic compression stockings, to prevent the thromboembolism. Next, leg exercise, early embolism, and encourage following operative operative delivery. So after the operative delivery, operative surgery हुआ, operative delivery हुआ है, LSC हुआ है, तो we will recommend for the early embolism. We will encourage the mother for early ambulation. And leg exercise we will encourage. We will encourage the mother to do the leg exercise and the early embolism in the condition of operative delivery.
Next, as we have discussed the risk factor, we divided the women. We put the women in the risk in the categorize in three risk factor. We categorize the risk factor into three. So according to that only we will decide the thromboprophylaxis. जो मदर लो रिस्क पे है, जो वुमेन लो रिस्क पे है, she don't require any person, she who don't have any personal family history of VTE, so उसको क्या करना है, उसको थ्रोम्बो, there is no need for thromboprophylaxis. Early mobilization we can do and adequate hydration to be maintained for that mother who is at लो रिस्क पे कौन है, जिसका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है. जो मदर हाई रिस्क पर है, द मदर हु इज़ ऑन हाई रिस्क, उसके लिए हम लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन प्रोफिलेक्सिस हम दे सकते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड द पोस्टपार्टम के टाइम पे टिल दी 6 वीक्स. जो मदर इंटरमीडिएट रिस्क पर है विद 3 और मोर रिस्क फैक्टर लाइक एज, ओबेसिटी, तो उनको हम दे सकते हैं फॉर कंसीडर एंटीनेटल प्रोफिलेक्सिस विद दी LMWH मीन्स दी लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन अप टू द 7 days ऑफ पर्पेरियम. इंटरमीडिएट रिस्क में हम 7 days तक देते हैं और हाई रिस्क में हम 6 weeks तक देंगे विद लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन. सो दिस इज़ हाउ हम जो रिस्क में कैटेगराइज्ड है मदर, हाई रिस्क, लो रिस्क एंड इंटरमीडिएट रिस्क में, उनमें डिफरेंट टाइप से उनको उनका मैनेजमेंट करना है. लो रिस्क मदर में हम जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनको नो नीड ऑफ थ्रोम्बोप्रोफिलेक्सिस, अर्ली मोबिलाइजेशन हम कर सकते हैं और उनका हाइड्रेशन मेंटेन करना है. हाई रिस्क मदर में लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन देना है एंड दी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड दी 6 week ऑफ आफ्टर द 6 weeks ऑफ पर्पेरियम उसे कंटिन्यू रखना है. देन इंटरमीडिएट रिस्क में उसको एंटीनेटल प्रोफिलेक्सिस लाइक एंड लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन up to the 7 days of puerperium in intermediate risk. Next, what could be the management? Management. The patient is to put bed rest with the foot and raised above the heart level. जो उसका foot end है above should be raised above the heart level. पेशेंट को बेड रेस्ट देना है. लेग शुड बी एलिवेटेड मीन्स. पेन है तो पेन के लिए हम उसको एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं एंड उसको एंटीबायोटिक्स देंगे और एंटीकोगुलेंट्स देंगे उसको. हिपैरिन 15,000 यूनिट्स आर एडमिनिस्टर्ड. IV देना है फॉलोड बाय द 10,000 यूनिट 4 to 6 hourly for 4 to 6 injection when the blood coagulation is like to be depressed. तो हिपैरिन देन कंटिन्यू करना है फॉर 7 to 10 days के लिए, इवन लॉन्गर. हमें देखना है जब तक उसका जो थ्रोम्बोसिस अगर सीवियर है तो हम हिपैरिन कंटिन्यू कर सकते हैं इवन आफ्टर दी 7 to 10 days. अगर उसकी हम कैसे पता चलाएंगे कि वो सेफ कंडीशन में आ रहे हैं, उसका एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखना है. इट शुड बी 1.5 to 2.5 एंड उसका सीरम हिपैरिन लेवल शुड बी 0.1 to 0.2 होना चाहिए. तो दिस इज दी दिस इंडिकेट द सेफ एंटीकोगुलेशन. लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन कैन बी यूज्ड सेफली इन प्रेगनेंसी. एनेक्सोपेरिन 20 mg उनको देते हैं जिनमें या इनेक्सोपेरिन 20 mg और 40 mg डेली दे सकते हैं. ये प्लेसेंटा, इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, को क्रॉस नहीं कर सकती है. उसके अलावा फोंडा पेरिनेक्स देते हैं. फोंडा पेरिनेक्स क्या है? सिंथेटिक पेंटासेक्राइड है एंड इट कैन इनहिबिट द फैक्टर 10 बट नॉट थ्रोम्बिन. तो फोंडा पेरिनेक्स क्या करता है? दिस कैन इनहिबिट द फैक्टर 10 बट नॉट द थ्रोम्बिन. बट ये उस कंडीशन में देते हैं इन केस द हिपैरिन इंड्यूस्ड
एनी एलर्जी, अगर हिपैरिन से कोई एलर्जी है या कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एनी काइंड ऑफ हिपैरिन एलर्जी है, देन हम उसको देंगे फोंडापेरिनिक्स। Then a drug coumarin series warfarin is commonly used rarely orally when with an overlap of at least 3 days with heparin. The initial daily single dose of 7 mg we will give for 2 days, adequate for induction. Subsequent maintenance dose depend on the international normalized ratio, which should be within the range of 2.3 to 3.0. 2.0 to 3.0 means 2 to 3. The daily maintenance dose क्या है? warfarin का daily maintenance dose है 5 to 9 mg to be taken at the same time each day. Anticoagulant therapy should be continued till all evidence of disease have disappeared, which generally take 3 to 6 months. तो means 3 to 6 month के लिए anticoagulant therapy should be continued. Anticoagulant warfarin या anticoagulants like warfarin, low molecular weight heparin and unfractioned heparin is safe for breastfeeding. सो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी इन एंटीकोगुलेंट से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये एंटीकोगुलेंट जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी सेफ हैं। एज सुन एज पेन सबसाइड, जेंटल मूवमेंट इज़ अलाउड ऑन बेड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। सो जैसे ही पेशेंट इज स्टेबलाइज या उसका पेन सबसाइड हो जाता है, उसको हमें जेंटल मूवमेंट करने के लिए बोलना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। हाई इलास्टिक स्टॉकिंग्स हम उसको अलाउ कर सकते हैं, और उसको अफेक्ट है जो लैग बिफोर मोबिलाइजेशन मीन्स हाईली क्वालिटी इलास्टिक स्टॉकिंग्स आर फिटेड ऑन द अफेक्टेड लैग बिफोर द मोबिलाइजेशन से पहले हमें उसको हाईली इलास्टिक स्टॉकिंग्स दे सकते हैं। इंफीरियर वेना केवा फिल्टर्स आर यूज फॉर द पेशेंट विद द रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म और वेयर एंटीकोगुलेंट थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो जिनमें रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस हैं उनको हम इंफीरियर वेना केवा फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, और या फिर जिनमें एंटीकोगुलेंट थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उनके लिए हम कर सकते हैं इंफीरियर वेना केवा फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। वेना केवा may be completely ligated by the telephone clips. Fibrinolytic agent like the streptokinase produced rapid resolution of pulmonary emboli, and the venous thrombectomy is needed for massive iliofemoral vein thrombosis or for massive pulmonary embolism. So जिसमें ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो गई है, जिसमें ज़्यादा ही बेकार कंडीशन हो गई है इलियोफीमोरल वेन थ्रोम्बोसिस की, या मैसिव कंडीशन हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, उनमें हम कर सकते हैं वीनस थ्रोम्बोक्टोमी। नेक्स्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। Pulmonary embolism is the leading cause of maternal death. It may centrally, especially in developed countries, after the sharp decline of maternal morbidity due to the hemorrhage, hypertension, and the sepsis. So there are more chances of maternal death into the pulmonary embolism. Pulmonary embolism, the clinical feature depend on the size of embolism, and प्रिसिडाइजिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। सो दो फीचर्स हैं, जो क्लिनिकल फीचर हैं ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, वो डिपेंड करते हैं कि एम्बोलस का साइज़ क्या है उस पर। दैट यूजुअली अकर विद इन द शॉर्ट टाइम फ्रॉम द शॉक एंड द वजाइनल वेगल इनहिबिशन। द इम्पॉर्टेंट साइन क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के? इम्पॉर्टेंट साइन आर ट्रैकिपनिया मीन्स मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट, डिज्निया, प्लेराइटिक चेस्ट पेन, कफ, ट्रैकिकार्डिया, हेमोप्टाइसिस and rise in temperature more than 37 degrees Celsius. These are the important sign and symptom of the pulmonary embolism. Diagnosis. How we will diagnose? We can do the X-ray of the chest,
ECG, arterial blood gas, D-dimer, and the Doppler ultrasound. The most specific is the Doppler ultrasound. Next, we can do the lung scan. Lung scan, ventilation perfusion scan, or VQ scan we can do to detect the embolism. MRI can be used in pregnancy as the risk of ionizing radiant are absent. If there is no risk to mother with the MRI, we can use the MRI to detect the pulmonary embolism. Rest we can do the pulmonary angiography, spiral computed tomography, pulmonary angiography, magnetic resonance angiography we can do to diagnose the pulmonary embolism. Management prophylaxis is same we discussed into the pulmonary into the puerperal thromboembolism. Active treatment include the resuscitation we can do in the embolism condition like cardiac massage, oxygen therapy, intravenous heparin bolus dose of 5000 international unit and morphine 15 mg. IV are started. Heparin remain the mainstay of therapy of venous thromboembolism. Therapeutic dose of low molecular weight heparin may be used. Next, we can use the IV fluid support to continue the blood pressure is maintained and blood pressure is maintained. We can continue the IV fluids to prevent the tachycardia. We can tachycardia is counteracted by the digitalis, and the recurrent attack of pulmonary embolism necessitates surgical treatment like embolectomy, placement of inferior vena cava filter, and the ligation of inferior vena cava and the ovarian vein we can do. These surgical procedures we can do in the case of recurrent attack of pulmonary embolism. Indication for inferior vena cava filter are absolute contraindication to medical anticoagulants. जो जिसमें एंटीकोगुलेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं उनके लिए हम inferior vena cava filter यूज़ करते हैं. एंड द फेलियर ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के लिए heparin induced thrombocytopenia and the allergy to heparin. In these condition we can use the inferior vena cava filter. Contraindication of heparin therapy are women with the active antenatal and postpartum bleeding. उनको हम ये नहीं देते हैं, heparin नहीं देते हैं. Risk of major hemorrhage like placenta previa and coagulopathy and the thrombocytopenia. So in these conditions we will avoid the heparin therapy. This is all about the puerperal thromboembolism and the pulmonary embolism. So if you have any doubt, you can ask me on WhatsApp group. Thank you.